Hello students, welcome to Learners University. My name is Rupal Kaur Anand and in today's video we will be doing the last topic of class 8th of history chapter 2nd Trade to Territory. We have already discussed all the topics and if you want to see the videos and understand those topics there is a playlist of social science of class 8th where you can find all the previous videos and you can watch it yourself. And if you have any doubts, you can ask me in the comments. So we have discussed in previous video subsidiary lines, outright wars and doctrine of lapse. So in today's video, we will discuss the Anglo-Sikh wars. There were two Anglo-Sikh wars and how the Punjab was annexed by the Britishers. So we have discussed how Mysore and how Maratha Empire was annexed. Now we will discuss how Punjab was annexed. So in first Anglo-Sikh War from 1845 to 1846, it was the time during the Napoleonic Wars. Napoleonic Wars were basically the wars between Napoleon in France and England and all the allies. So the British finally defeated their French rivals on the subcontinent and dominated most of their native princes. The exception was that Sikh kingdom, Punjab was the Sikh kingdom and was powerful, and the ruler of this kingdom was Maharaja Ranjit Singh. In his reign, he had a very good army. The army was known as Khalsa, and these Sikh soldiers were strict by discipline and trained by the European American mercenaries. So they were disciplined and they had high morals and they served their state. So this is Maharaja Ranjit Singh. His one eyes was not very good. It was due to smallpox. He catched at the young age, and this is his son Dilip Singh. So after the death of Maharaja Ranjit Singh, his 5-year-old son, this Dilip Singh, eventually succeeded the throne, and his mother Maharani Jind Kaur was the regent at that time. Regent was basically in his like regent was kind of the she was the mother queen and mother after she will rule up till Dulip will succeed 18 years. But the Sikh court in Lahore was full of corruption and it was incapable of controlling the army. So there it's unpredictable will was expressed through the influential committees, okay, to which all the ranks had right free expansion. Basically, what happened was that after the death of Maharaja Ranjit Singh, their army got weaker, and the because of the corruption in the court of Maharaja Ranjit Singh, and when he died, he was a very strong king, and he has a good ties with the British Empire, British East India Company. So when he was alive, when Maharaja Ranjit Singh was alive, Britishers never interfered in their territory in the Punjab. But after his death, they have seen that Punjab has gotten weaker. Punjab has gotten weaker, and the Jind Kaur was a regent, and Dilip Singh was not as powerful. He was very young. So they had a war. In second Anglo-Sikh war, the Sikh kingdom was annexed to the British Empire, and the boy king, who was Maharaja Dulip Singh, was forced to leave Punjab. He was converted to Christianity and he was sent to Britain for education as an English gentleman. He cannot even come after his father's death, and he never have seen that. So now we are going to read about what was the structure of British administration. Let me tell you, the today administration, like what we have today, is taken from that time. So at that time there were four major wow, there were four major categories. First was civil services, जो हम अभी discuss कर रहे हैं. Then was judiciary, police,
and army. Sorry, police and army. So there were four main categories. जो सिविल सर्विसेज है इनको इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने सेट किया था. टेक्निकली लॉर्ड वेलेस्ली ने एक विलियम कॉलेज सेट किया था कैलकाटा में. इट वाज अ काइंड ऑफ क्रिश्चियन काइंड ऑफ कॉलेज एंड यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाई जाती थी. East India College in England was another institution which trained young recruits. ये भी ईस्ट इंडिया कॉलेज था इंग्लैंड में. ये भी सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करवाता था. और 1853 तक तो जो सिविल सर्वेंट्स है उसको डायरेक्टर ऑफ कंपनी ही, मतलब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वही रिक्रूट करती थी. बट 1853 के बाद एग्जाम्स होने लगे जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कहते हैं. अब ये जो एग्जाम्स है ना ये लंदन में होते थे. नाउ हियर इज द loophole or cliche. Here the point was कि यहाँ पे सपोज समवन हु इज नॉट वेरी मच लाइक यहाँ पे जो अमीर है वही जा सकता था इंग्लैंड, क्योंकि ट्रैवलिंग कॉस्ट वाज ए वेरी एक्सपेंसिव. सो जो पुअर है या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते थे बाहर जाना. सो एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन लंदन and only few Indian can afford to travel at the cost of expensive. The medium of expression was English. अब यहाँ पे सेकंड थे हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा थी, बट वहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इंग्लिश थी. दिस इज द मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द इंडियंस कैन स्पीक इंग्लिश दीज डेज, क्योंकि उस टाइम पे एजुकेशन ही इंग्लिश में कर दी गई थी. विच इट एट दैट टाइम इंग्लिश वाज अ फॉरेन लैंग्वेज टू अस. सो दो मेन प्रॉब्लम आती थी इंडियंस को सिविल सर्वेंट्स बनने में. पहला तो लंदन में था इसका, जहाँ पे एग्जाम जो होता था वो लंदन में होता था. दूसरा इंग्लिश में होता था. So it was kind of tough for most of the Indian students. Then there was another thing which would be mentioned in your book, that ये जो ब्रिटिशर्स थे इनका ये कभी भी सिविल सर्वेंट्स हाई पोस्ट पे इंडियंस को नहीं लेते थे. अब सेकंड है आर्मी है. आर्मी इंडियन सोल्जर्स की बनी होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम और उनको सिपॉयज कहते थे. The British ये जो सिपॉयज थे they were disciplined and they carry muskets. Muskets है basically गन होती है, लंबी वाली गन देखी होगी कभी मूवीज वगैरह में. And these army was given salaries and they were Indian soldiers थे but they were loyal to Britishers. Contradictory. पुलिस जो थी लॉर्ड वेलेस्ली ने सेटअप किया था. विलियम कॉलेज आई गेस, विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने सेट किया था. एंड ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उन्होंने पुलिस परमानेंट पुलिस सेट करी, मतलब इंट्रोड्यूस किया सिस्टम परमानेंट पुलिस वाला. ईच डिस्ट्रिक्ट हैड थानास. थाना आज भी हम हिंदी में पुलिस स्टेशन को थानास बोलते हैं. और दरोगा थे, दरोगा इज लाइक इंस्पेक्टर. हिंदी में इंस्पेक्टर को आज भी दरोगा बोलते हैं. टाउन्स एंड विलेजेस हैड कोतवाल्स एंड चौकीदार्स. चौकीदार्स भी लाइक समवन हु टेक केयर ऑफ द सोसाइटी. तो काफी हद तक जो चीजें तब इंट्रोड्यूस हुई थी वो अभी चल रही हैं. तो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वाज क्रिएटेड टू लुक आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट. तो पुलिस का ये सिस्टम था. और उसके बाद जुडिशरी में दो कोर्ट सेट हुए थे. ठीक है, इसको भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शेप दिया था जुडिशियल सिस्टम को. इन्होंने दो टाइप ऑफ कोर्ट सेट करे और आज भी दो ही टाइप के हैं. एक सिविल कोर्ट है जहाँ पे सिविल कोड यानी कि यहाँ पे प्रॉपर्टी के इश्यूज या मतलब जो जिसमें खून खराबा नहीं हो, प्रॉपर्टी के या ट्रेसपासिंग के छोटे मोटे इश्यूज सिविल कोर्ट्स में सॉल्व करे जाते हैं. और दूसरा है क्रिमिनल कोड, जिसे का मर्डर हो गया, कोई किडनैप हो गया, यहाँ पे क्रिमिनल कोर्ट में वो सारे केसेस आते हैं. अब जो सिविल कोर्ट है इसको हम कहते हैं दीवानी अदालत. और जो क्रिमिनल कोर्ट्स है इसको हम कहते थे फौजदारी अदालत. और ये चीज जुडिशरी के अंदर थी. एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो आज हम बात करते हैं आईपीसी धारा 10, इसको फुल फॉर्म है इसका इंडियन पीनल
कोर्ट, और ये उसी टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। 1833 के लॉ कमीशन में इंडियन पिनल कोर्ट बनाया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश, इसने रूल ऑफ लॉ बनाया। आज भी रूल ऑफ लॉ बहुत फेमस है। रूल ऑफ क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। बेसिकली रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, डजेंट मैटर, जब हम कोर्ट में खड़े होते हैं तो सब लोग इक्वल है। तो इनका ये एडमिनिस्ट्रेशन था, चार: सिविल सर्विसेज, जुडिशरी, पुलिस एंड आर्मी। So with this, I think we have completed this chapter. So have a good day. And if you like this video, please like in the thumbs, on the thumb, and please subscribe to our channel and share it with your friends, and don't forget to press the bell icon. And if you have any doubts, anything that you want to ask, then tell me in the comments. Have a good day. And if you want to see some educational videos, there is another playlist which is like with the name Journal Topics. And then Jyoti ma'am is also like also teaching integers of class 7th. So if anyone wants to learn that, you can watch, go in that playlist too. So we have playlist you can watch in the on the category of playlist, and you can watch all the videos. So have a good day. I think that's it.